Hi, good morning students. We shall see now concept of maximum work. हालांकि हमने देखा है maximum work is done by a system during isothermal and reversible process. Now we shall see in detail here. We know work done by system during expansion or compression, W is given as product of minus external pressure and change in volume. Work done during expansion or compression, yeah, we can say pressure volume type of work done is equal to the product of external pressure into change in volume with negative sign. Smaller the values of external pressure and volume change, smaller, yeah, lower will be the amount of work done, and higher the values of these two, more and more amount of work will be done by system. Consider case number 1, gas is allowed to expand in vacuum. वैक्यूम में अगर गैस एक्सपांड होता है तो कितना वर्क डन होगा, देखा है हमने. इन वैक्यूम एक्सटर्नल अपोजिंग प्रेशर इज जीरो. वैक्यूम में एक्सटर्नल अपोजिंग प्रेशर जीरो होता है, सो वर्क डन W will also be zero in vacuum. यानी no work will be done when gas expands in vacuum. Now consider second case. If external pressure is increased slightly, अब हम क्या करेंगे बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, एंड एज दिस एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन जीरो, थोड़ा ही है लेकिन ग्रेटर देन जीरो, यू विल फाइंड दिस प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन जीरो. हालांकि प्रोडक्ट स्मॉल होगा बट ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम. क्या एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम स्लाइटली इंक्रीज करेंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन, एंड विथ इंक्रीज इन प्रेशर, जैसे हम प्रेशर थोड़ा थोड़ा एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे, यू विल फाइंड वर्क डन विल आल्सो इंक्रीज. यानी जैसे जैसे हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देंगे तो वर्क डन की वैल्यू बाय सिस्टम वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. जितना अपोजिंग प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर हम मैक्सिमाइज करेंगे, मोर एंड मोर वर्क विल बी डन. बट while increasing external opposing pressure, we come across case number 3. एक्सटर्नल प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, एट वन पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर विल बिकम इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस. एक्सटर्नल प्रेशर एग्जैक्टली इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस होगा, यानी प्रेशर ऑफ गैस की वजह से गैस अंडरगोज एक्सपांशन, और उसे अपोज करने वाला प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर. जैसे एक्सटर्नल प्रेशर हम बढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा, एक पॉइंट को एक्सटर्नल प्रेशर एंड प्रेशर ऑफ गैस दे बिकम इक्वल, और जब दोनों भी वैल्यू इक्वल बन जाएगी, there will be no change in volume. External pressure and pressure of gas अगर दोनों इक्वल होते हैं तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ opposing force and driving force both they have become equal. Volume change will be zero, and once again work done will also be zero, यानी no work is done. वैक्यूम में भी वर्क डन नहीं होगा क्योंकि अपोजिंग प्रेशर जीरो है. अगर हम प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन. लेकिन जब एक्सटर्नल प्रेशर और प्रेशर ऑफ गैस दोनों इक्वल बन जाएंगे, अगेन देयर विल बी नो वर्क डन. एंड इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज स्टिल इंक्रीज, वी कम एट केस नंबर 4. और अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर और बढ़ा देंगे, नाउ एक्सटर्नल प्रेशर विल बिकम ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ द गैस, एंड इन दिस केस गैस कांट अंडरगो एक्सपांशन. गैस का अब एक्सपांशन नहीं होगा, एक्सपांड नहीं होगा गैस, रादर गैस विल अंडरगो कंप्रेशन, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस से ज्यादा है. तो यहाँ गैस का कंप्रेशन होगा, यानी वर्क इज नॉट डन बाय सिस्टम, रादर वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम. यहाँ सराउंडिंग वर्क डन करेगी सिस्टम पे, सिस्टम से वर्क डन नहीं होगा. सो फ्रॉम ऑल दीज केसेस वी कम टू नो दैट हायर द एक्सटर्नल प्रेशर, हायर विल बी द वर्क डन. लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर हम प्रेशर ऑफ गैस से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो फिर वर्क डन नहीं होगा या निगेटिव होगा. यानी टू हैव मैक्सिमम वर्क एक्सटर्नल अपोजिंग प्रेशर शुड बी मैक्सिमम. मैक्सिमम वर्क डन करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर मैक्सिमम होना चाहिए, बट इट शुड बी स्मॉलर देन प्रेशर ऑफ गैस. गैस का प्रेशर जो होगा उससे इन्फिनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू से अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर स्मॉल रखेंगे तो वर्क डन विल बी मैक्सिमम. एंड इफ pressure of gas is infinitesimally greater than external pressure,
या pressure of gas is infinitesimally smaller than pressure of gas, then work done will be maximum. But this type of condition is possible in isothermal and reversible process. And hence we say, in isothermal reversible process, work done is maximum. Okay. Now we shall see one simple point. Product of pressure into volume is always equal to work done. Thermodynamics में हमने देखा कि pressure volume type of work is considered. Pressure volume product is taken to be work. Why? P into V. Now what is pressure? Force applied per unit area. So mathematically PV equals to, we can write F by A into V. Force we shall keep as it is. Dimensions for area आपको पता है, area के dimensions length square, so d square. Volume के dimensions d cube या d cubed. So d square will be cancelled and we get this product to be F into d. यानी PV ये product it is equal to F into d, but we know F into d, force applied into displacement, is nothing but work done. So pressure volume product in thermodynamics is taken to be work done. Okay, और एक पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे, heat and work, as we know they are path functions, they are not state functions. Work done और heat, ये जो दो प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली these are not property of the system. जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह से हीट और वर्क दे आर नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम and they are not state functions, rather both they are path function. ये भी पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें ध्यान में रखना है कि which of the following is path function. Heat and work, these are path functions. Okay? अब देखो एक बहुत सिंपल बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिट हम यहाँ देखेंगे. First law of thermodynamics. We know thermodynamics is based upon three basic laws. First law, second law and third law of thermodynamics. All these laws they have no theoretical proof. बेटा इसके लिए कोई theoretical proof नहीं है या जरूरत भी नहीं है. All these laws they are based upon human experiences or experimental observations. जो भी laws दिए गए हैं we can experience them. हमारा वो daily experience होगा कि they are true. Now first law of thermodynamics is also known as law of conservation of energy, और I am sure आपको ये पता है law of conservation of energy. What is first law? देखिए it can be expressed in different forms. अलग अलग तरीके से दिया जाता है. First form, energy can neither be created nor destroyed, but it can only be converted from one form into another form. What is the first form? Energy can neither be created nor destroyed, but it can only be converted from one form to another form. Conversion होता है एक फॉर्म से लेकर दूसरे फॉर्म में, लेकिन new creation of energy or destruction of energy is not possible. And we know energy transformations या conversions, electrical energy can be converted into mechanical energy to run machines, electrical energy into light energy, potential energy of water stored in dam into kinetic energy when it falls down, then kinetic energy into electrical energy, kinetic energy used to run turbines, generate electricity. So these are conversions, but energy can neither be created nor destroyed. Second form, total energy of the universe is always constant or conserved. पूरे यूनिवर्स की टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. मीनिंग वही है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स इज आल्सो ऑलवेज कांस्टेंट. सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल एनर्जी अगर हम देखेंगे तो वो भी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नथिंग बट यूनिवर्स. Total energy of an isolated system is always constant. Isolated system पता है हमें, it can exchange neither energy nor matter. Insulation होता है तो उसकी भी total energy constant होगी. और फिर all these statements number 2, 3 and 4 they have same meaning as first statement. Energy can neither be created nor destroyed. Statement होते हैं एग्जाम में. Now mathematical expression for first law of thermodynamics.
probably simplest derivation. Mathematical expression for first law. Consider internal energy of a system in initial state is U1. Initial state में system की internal energy U1 है. Energy of this system can be changed by two ways. Either by exchange of heat energy or by doing work on system और बाय सिस्टम. दो तरीके से हम इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं. इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इनिशियली Q1 है. सपोज Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू दैट सिस्टम एंड W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. देखो बेटा, इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्टेट में U1 होगी और उस सिस्टम पे हमने W इतना वर्क डन किया और Q क्वांटिटी ऑफ हीट उसे सप्लाई कर दी. सो final internal energy U2 will be equal to initial value U1 plus additional values due to Q and W. So transferring U1 to left side, U2 minus U1 is equal to Q plus W. But what is U2 minus U1? It is delta U, change in internal energy. So delta U will be equal to Q plus W. This is mathematical expression for first law of thermodynamics. Delta U is equal to Q plus W. This is simplest mathematical expression for first law. And internal energy change of system is equal to heat change and work done by or on the system. If we consider infinitesimally small values, then above expression takes the form du equals to dq plus dw. What is du? Infinitesimally small change in internal energy. dq infinitesimal small change in heat, and dw is infinitesimal small amount of work done. Now we shall see sign conventions for the terms involved in mathematical expression of first law. बहुत सिंपल सा पार्ट है, no doubt. For delta U, internal energy change, if internal energy of system increases and U2 is greater than U1, then delta U is taken as positive. And if internal energy of system decreases and U2 is lesser than U1, then delta U, it will be negative. For heat, if heat is absorbed by system, Q is positive. अगर heat absorb होती है system से, तो system के लिए Q की value positive होगी. And if heat is evolved by system, Q की value, it will be negative. And for W, as we know, if work is done by system on surrounding, W is negative. And if work is done on system by surroundings, then work done will be positive. और एक important part देखते हैं बेटा हम यहाँ. डेल्टा U equals to Q plus W, ये एक्सप्रेशन हमने देखा है फर्स्ट लॉ के लिए. एक बात ध्यान में रखो, Q and W, as I told, they are always path functions. Energy, heat, और वर्क डन W. हीट एनर्जी और वर्क डन दोनों भी पाथ फंक्शंस होते हैं. दे डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड. बट सम ऑफ द टू, डेल्टा U, इट इज ऑलवेज अ स्टेट फंक्शन. और बहुत बार ये एमसीक्यू होता है, Q and W, दो दे आर पाथ फंक्शंस, डेल्टा U, इंटरनल एनर्जी, इट इज अ स्टेट फंक्शन. Q, W अलग अलग पाथ फंक्शंस होते हैं, लेकिन Q प्लस W की वैल्यू अगर हम कलेक्टिवली लेते हैं तो इट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी. और ये क्या होगा? इट इज स्टेट फंक्शन. और एक बात, दो स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग थ्रू माय वीडियोस, फॉर एनी डाउट्स दे कैन कॉन्टैक्ट फोन नंबर्स ऑन वेबसाइट गिवन बाय ज्ञानसागर क्लासेस औरंगाबाद. अगर आप बच्चों को कुछ डाउट्स आते हैं रिलेटेड टू केमिस्ट्री, या जो भी वीडियोस आप मेरे देखते हो उसमें अगर आप कुछ डाउट आते हैं आपको, तो ज्ञानसागर क्लासेस औरंगाबाद, उसकी वेबसाइट पे या उसके फोन नंबर पे आप वो डाउट्स पूछ सकते हैं.